Good morning, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and this is our daily Hindu editorial analysis. I hope I'm clearly visible and audible to everyone. Good morning, Abhinav, Kanishka in the app, and good morning. Okay, so you have this poll now. The poll has already started. Good morning, everyone. Good morning. Poll में टाइम गलत टच कर दिया, 7 AM चाहिए था लेकिन 10 AM टच कर दिया, तो 10 AM काउंट किया जाएगा. All those people who are in the app, are you able to see the poll in the app? Are you able to see the poll in the app as well? Good morning, everyone. Good morning. So just confirm if I'm clearly audible, because I'm using the same mic I was using yesterday. Thank you, Ishan. Thank you so much, my child. I hope you are benefited through it. Okay, so anyone who thinks there's an issue with the audio at any moment, just tell me, I'll switch to the other mic, okay? All right. Good morning, everyone. So, no, you could not see this. Kanishka, Abhinav, अभी क्लास कर लेते हैं एक बार. बिफोर द क्लास एंड्स एक बार गो टू यूट्यूब टुवर्ड्स द एंड, और वहां आपको पोल मिल जाएगा. वहां क्लिक ऑन द प्रेफर्ड टाइमिंग. ठीक है, 10 AM चाहिए, 7 AM चाहिए, योर प्रेफर्ड टाइमिंग. जो भी जीतता है उसका टाइमिंग सेट हो जाएगा. ओके, ऑल राइट. सो हियर वी गो. टुडे इज 10th of December. We are going to take 2 articles. I think both are from the Indian Express. Yes, both are from the Indian Express. आज हिंदू से आर्टिकल नहीं लिया. आपको रीजन पता लग गया क्यों नहीं लिया. दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है. सेकेंड आर्टिकल आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांग, मेरा गट फीलिंग है कि वो एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बन सकता है. आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग गट फीलिंग अबाउट दैट. तो विल सी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. उसमें बहुत सारे नीटिग्रिटीज है, डिटेल में इन्फरेंस बहुत सारे करने पड़ेंगे. तो धीरे धीरे पढ़ेंगे उस आर्टिकल को और बहुत सारी इन्फ्रेंस करेंगे. फर्स्ट आर्टिकल तो लेना जरूरी था मुझे, है ना. तो डिस्कस करते हैं. दोनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से आएंगे, बट वो सब स्टार्ट करने से पहले वी हैव फ्लैट 25% ऑफ गोइंग ऑन ऑल आवर क्लासरूम प्रोग्राम्स. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एनरोलिंग योरसेल्फ, दिस इज द राइट टाइम. जल्दी से एनरोल कर लो. कोई भी अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारे न्यू बैचेस भी हमने लॉन्च किए हैं. बता देती हूँ बैचेस के बारे में, कौन कौन से बैचेस हैं. The first one is if you're targeting CLAT 22, we have a newest batch 5 that we have recently launched. I'll be teaching in this batch as well. The enrollments have already started on 8th of December. बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी से, तो जल्दी एनरोल कर लोगे तो क्लासेस मिस नहीं होंगी. और 25% ऑफ चल ही रहा है, तो उसको यूटिलाइज करके 25% ऑफ ले लो. सेकेंड, इफ यू आर टारगेटिंग 2023 CLAT, जो कि अब 2022 में ही होने वाला है दिसंबर में. लेटेस्ट बैच इज बैच 6. इसमें भी मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, तो जल्दी से एनरोल कर लो इसके लिए भी. और अगर आप MHC, TS, CLAT, BLAT, जामिया, ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट करो जिनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम CLAT, तो इसके लिए भी एक न्यू बैच है. आई विल बी टीचिंग इन दिस बैच एज वेल. तो अगर डिफरेंट है आपका टारगेट, नॉट CLAT, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो एट द अर्लीस्ट. ओके, yes, attribute to our CDS. Yes, Abhishek, you got it right. Okay, रुद्रांश, करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं? बच्चे, ये मैं आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी को आंसर करने के लिए दे दूंगी. ठीक है, मैं आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का नोट्स बनाना सिखा सकती हूँ. शबनम, नो. सिर्फ ये सेशन जो मल्टी स्ट्रीम होता है. पोल नहीं आया. रुको 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 वैभव, आई गेट इट. पोल नहीं आया. पोल आएगा. एवरीवन इन द ऐप हु इज वाचिंग मी, द पोल इज विजिबल ऑन यूट्यूब. अभी जब तक मैं आपको स्टार्ट करती हूँ सेशन, जल्दी से एक बार यूट्यूब पे खोल लो मेरा वीडियो, वहां पोल है, वहां पोल पे क्लिक कर दो. जो भी आपका प्रेफर्ड टाइमिंग है, ऐप पे नहीं आएगा, ये यूट्यूब पे ही आएगा. वहां क्लिक करके फिर वापस ऐप पे आ जाओ. ओके, ऑल राइट. ओके, ओके, 5%. ओके, बस बस बस, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बातें नहीं करेंगे हम. ओके, 22 के 2 और बैचेस हैं.
ये बैच बाइलिंगुअल है। अगर आप बाइलिंगुअल में ज्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पार्शली इंग्लिश पार्शली हिंदी, दिस बैच इज फॉर यू। और ironically I'll be not teaching in the bilingual batch, I'll be teaching in this batch that's in English, so you could choose whatever batch you're the most comfortable with। और उसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, 25% ऑफ है, जल्दी से कर लो, टाइम नहीं है आपके पास। क्लास में क्या करेंगे? we'll do quote of the day that you're going to give me, then we will revise 3 questions from yesterday's class through one word substitution। ओके ये क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, 2 आर्टिकल्स लेंगे, उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज दोनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से, you'll know why when we discuss them, why no Hindu article, you'll also know that। we'll take out all the vocabulary, phrasal verbs, idioms from those articles, we'll try to memorize them। in the end you will tell me the tone of the author। people who haven't seen my videos on tone of the author, there are 3 videos that I've already made that are available on our YouTube channel। just search in the YouTube bar Alpa Sharma tone of the author, आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज वॉच them, that should be enough for you to understand how to identify the tone of the author। प्लस आप लिखेंगे summary of each article in not more than 1 line। I'm going to check it throughout the day। आप लिखेंगे under my video in the comment section। और क्लास के एंड में हम आज की न्यूज़पेपर्स देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट आए हैं जो पढ़ना जरूरी है आपको। वन मोर, इनफैक्ट 2 more अनाउंसमेंट्स। कल सैटरडे है एंड परसों संडे है। सैटरडेज एंड संडेज वी डू नॉट हैव आवर हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास, बट सैटरडेज आर डेज फॉर व्हाट डू वी डू ऑन सैटरडे? ओके, व्हाट डू वी डू ऑन सैटरडे? एनीवन? डन? ओके, ऑल राइट, गुड। On Saturday we have our Ask Me Anything session. So whatever doubts that you have beyond this class, because this class is so power packed already for 1 hour, we don't have time to answer your queries. Tomorrow is going to be an Ask Me Anything session. You'll have to check the time early in the morning. जब भी वो session scheduled है, make sure you come live. I will try. So इसका एक disclaimer है, आपको patience रखना पड़ेगा उस Ask Me Anything session में, because I have hundreds and hundreds of people who come live। मैं कोशिश करती हूँ मैं सबके questions answer करूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर कभी कभी मिस हो जाता है तो फिर से पोस्ट करते हैं ना, क्योंकि इतने क्वेश्चंस में मिक्स हो जाते हैं आंसर्स, है ना। सो आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेरीज एज पॉसिबल। टाइमिंग कल सुबह आपको पता लगेगा, मुझे भी नहीं पता। इट्स गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। ओके, सो कोट ऑफ द डे लेते हैं। Be so busy improving yourself that you have no time to criticize others। Absolutely no time for anything else। आपका इंप्रूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। कल मेरी एक पेड बैच में क्लास थी ना, लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट बीइंग disturbed, being overwhelmed with the whole preparation that's going on। So इसमें इसमें आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट अपने आप को इंप्रूव करना। सो कोई जो भी बोलता है उस चीज से आपको इंपैक्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एक टारगेट रखो अपना, अपने आप का इंप्रूवमेंट करना। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द, एक मिनट, थैंक यू तनीषा, थैंक यू माय चाइल्ड। ओके सौम्या, कल कल आंसर करूंगी ये। ओके हेमंत, गुड जोक, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। ओके चलो फिर आज रिवीजन करते हैं स्टार्ट। कल किए थे वोकैबुलरी वर्ड्स। व्हाट इज वन वर्ड फॉर गैदर इनटू अ क्राउड और मास? एबिंग, पीडियाट्रिक, मिटिगेशन, कॉन्ग्रीगेट। सुपर इजी, एवरीवन शुड बी नोइंग द आंसर हियर। क्या होगा आंसर? पोल में मार्क कर दो प्रिया आंसर। ओके यस 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 यस, डाउट्स है कल आ जाना आस्क मी एनीथिंग में। ओके, आंसर इज डी, एब्सोल्युटली डी। सो congregate is to collect or gather into a mass or crowd। Let's move to the next word. A particular aspect or feature of something, realm, cohort, facet, pertain। यहां कंफ्यूजन हो सकता है मुझे लगता है आप लोगों को। Let's see how many of you get this। Yes, exactly Karthik। Con is together, not Kong, C-O-N। Okay,
ऑल राइट, यहाँ आंसर क्या बताइए? यस कनिष्का, यू गॉट इट माई चाइल्ड। यस, अब देखो आई टोल्ड यू यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। सम पीपल आर आंसरिंग realm, इट्स नॉट realm, इट्स facet. ओके, इट इज सी, इट्स नॉट pertain, it's C, facet. No Abhinav, it's C. I told you some people will have confusion. कल बहुत सारे नए वर्ड्स थे ना, इसलिए। Open and responsive to suggestion, easily persuaded or controlled. Etiquette, amenable, sporadic, cluster. क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का what do you think should the answer be? Okay. Exactly. Yes, Soumya, you can do that. Cohort, coterie, gamut, clique. Very good, Ashita. All are synonyms. It is amenable. Amiable or amenable, we did the difference yesterday. So this is amenable. Yes, it is. All right. Now let's move to the vocabulary from today's article. So many new words we have today. And today's class is extremely important. So if you think your friends aren't attending it, abhi jaldi se ek baar share kar do and ask them to come live, because I think something from today's session will come in the exam. Okay, so let's start with the vocabulary here. Just tell me if you've shared it. I'll thank you for that. Deploy, deployment of army, deployment of resources. ये दोनों टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. डिप्लॉय इज किसी भी चीज को इफेक्टिविटी के साथ काम में लेके आना, इज डिप्लॉयमेंट. स्मॉल स्टेट्स कैन ऑफन डिप्लॉय रिसोर्सेज मोर फ्रीली. वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं मोर फ्रीली. आर्मी डिप्लॉय होती है, उनको ऑन जॉब भेजा जाता है इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए, एक्शन में भेजा जाता है. दैट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी एज वेल. ओके, सो ऑफ कोर्स क्योंकि हम हमारे शहीद CDS पे लेने वाले हैं आर्टिकल, तो ये वर्ड आना ही था. नेक्स्ट वन, टेन्योर. टेन्योर इज क्या टाइम पीरियड तक आप वो पोजीशन में थे. द टेन्योर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, द टेन्योर ऑफ आवर प्रेसिडेंट. किस टाइम पीरियड तक वो पोजीशन होल्ड कर रहे थे, वो ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहे थे, इज द टेन्योर. हिज टेन्योर ऑफ प्रीमियरशिप वुड बी थ्रेटेंड, मतलब कोई शायद काउंटर करेगा उनके टेन्योर को. That's tenure. Okay, that's the second word. Yes, it is. It is, Priya, it is. Okay, all right. Chalo, next word, remit. Remit is nullify, cancellation. Okay, so the excess of sentence of over 12 months was remitted, cancel करते हैं, nullify करते हैं. Usually remit हम पनिशमेंट के साथ यूज करते हैं, या आपको जो कुछ लोन आपने लिया वो आपको पेमेंट करना होता है, बट उसका रिमिट हो जाता है, मतलब ठीक है मत पे करो, ये माफ कर दिया. So that माफी is remitting here. Cancellation और nullifying is remit. यहाँ एक्सेस जो सेंटेंस था 12 महीने का, एक्सेस जो इम्प्रिजनमेंट था पॉसिबली, उसको रिमिट कर दिया गया, नलिफाई कर दिया गया. ओके, नेक्स्ट, लेबेनस्ट्रॉम. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड एनीवन? क्योंकि हम ये बांग्लादेश के साथ, असम, बांग्लादेश, इन रिलेटेड एरियाज के साथ, UAPA के साथ हमने कई बार यूज किया है लेबेनस्ट्रॉम. सो लेबेनस्ट्रॉम इज अ जर्मन टर्म. अंडरस्टैंड दिस क्लियरली एवरीवन, क्योंकि ये आर्टिकल में इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होगा. लेबेनस्ट्रॉम इज अ जर्मन टर्म, नाजी आइडियोलॉजी के साथ बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड था. इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट इफ आई बिलोंग टू अ कल्चर or to a society or to a cult or group, I believe I need this specific area, this specific territory for the development of my culture, for the development of my society, for the development of my cult. तो ये टेरिटरी मेरे लिए छोड़ दो, ये मेरी टेरिटरी है, ये बिलीफ रखना is called लेबेनस्ट्रॉम. तो ये हम, अब आपको समझ में आ गया ये हम बांग्लादेश के रेफरेंस में क्यों यूज करते हैं, असम के रेफरेंस में क्यों यूज करते हैं, और नाजी आइडियोलॉजी में ये क्यों यूज किया जाता था. वो कहते हैं ये हमारे लिए छोड़ दो, नाजी आइडियोलॉजी कहते थे हमारे लिए छोड़ दो, ये अनफिट लोगों के लिए जगह नहीं है. ओके,
अच्छा, क्या हो गया तनु, क्या क्वेश्चन है? टेन्योर हिंदी में मुझे हिंदी वर्ड तो एग्जैक्टली इसका नहीं पता, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करती हूँ तो प्रेसिडेंट कितने टाइम तक पावर में रहेंगे, कितने टाइम तक अपनी ऑफिस की पोजीशन होल्ड करेंगे, ये उनका टेन्योर है। ठीक है, तो अगर 5 साल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पावर में रहेंगे और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में रहेंगे, तो 5 साल का टेन्योर हुआ इनका। ओके, ऑल राइट, यस ऑफ कोर्स आशीष, इस सेंस में यूज कर सकते हो आप। नहीं, ब्लास्फेमी अलग हो गया बच्चे, ब्लास्फेमी अलग है, ब्लास्फेमी तो हो गया फोपा। आई राइट दिस डाउन फॉर यू। फोपा का एग्जाम्पल हुआ ब्लास्फेमी, जिसको फॉक्स पास बहुत लोग बोलते हैं, बट ये फॉक्स पास होता नहीं है, दिस इज फोपा। ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, टेन्योर इज अ पीरियड। यस समर्थ, बिल्कुल हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है। ओके, सो यस, द टाइम पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, कार्यकाल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कार्यकाल। लेवेंस्ट्रॉम फिर से समझाती हूं, एग्जाम्पल देती हूं, मेरा एग्जाम्पल, सो दैट कोई और ऑफेंड नहीं हो। आई एम अ हिंदू, ठीक है, आई एम अ ब्राह्मण, और मुझे लगता है ये जो एरिया है जहां मैं रहती हूं, यहां मैक्सिमम ब्राह्मण्स रहते हैं और हिंदू से, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, प्लीज डोंट फाइट ओवर इट। मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं एक हिंदू, और जहां मैं रहती हूँ यहां सिर्फ ब्राह्मण्स और हिंदूज ही रहने चाहिए, ताकि मेरे कल्चर का अपलिफ्टमेंट हो, ताकि कोई और मुझे दबाए नहीं इस एरिया में। तो ये बिलीफ रखना कि ये टेरिटरी मेरी है, यहां किसी और के लिए जगह नहीं है, ये हमारे नाम कर दो। ये बिलीफ रखना कि मेरे डेवलपमेंट के लिए ये टेरिटरी का नाम चेंज कर दो, इसको ब्राह्मणिस्तान कर दो इस जगह का नाम, ये टेरिटरी मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए होनी चाहिए, और लोग रहेंगे लेकिन मेरे अपलिफ्टमेंट को दबाएंगे नहीं, ये आइडिया रखना इज लेवेंस्ट्रॉम। Yes, you're absolutely right. It is, but you can relate it to FOPA. These are basically blunders. Blasphemy is also a blunder. FOPA is also a blunder. But literal definition, you're absolutely right. It's against God. Okay? So इसीलिए आपने देखा होगा, तस्लीमा नसरीन का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। Blasphemy. So Taslima Nasreen is in exile from what country? Do you remember that? She is in exile from which country? जब तक आप आंसर करते मैं बताती हूं, because she had supposedly said things that were blasphemous against God. Okay? ठीक है अक्षित, मैं एक्सेप्ट कर सकती हूं आपका ये एग्जाम्पल। सबको आ गया समझ में लेवेंस्ट्रॉम कैसे यूज करते हैं ऐप में भी? ओके, इट कुड बी वृंदा, यस yes, she is an author, yes exactly Lakshmi, that is exactly क्यों ये नाजी नहीं, पाकिस्तान नहीं, तस्लीमा नसरीन इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, गलत इंफॉर्मेशन है। इसीलिए लेवेंस्ट्रॉम लिंक होता है नाजी आइडियोलॉजी से, बिकॉज दे वांटेड अ प्योर रेस, जर्मनी ऑफ देयर ओन, या बांग्लादेश, यस शी इज एन एग्जाइल फ्रॉम बांग्लादेश, यस यू राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया लेवेंस्ट्रॉम कैसे यूज करते हैं। द प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज ए लेवेंस्ट्रॉम बाय द गवर्नमेंट इज नाउ बीइंग अबॉलिश्ड। पहले लेवेंस्ट्रॉम दे दिया गया उस प्रॉपर्टी को, अब हटा दिया गया है लेवेंस्ट्रॉम वहां से। लिंच, मुझे ये वर्ड किसी को भी समझाने का नीड नहीं है, आपको पता होगा लिंच क्या है, ठीक है, हमने हमारे कंट्री में एग्जाम्पल्स देखे हैं लिंचिंग के। तो लिटरली इट्स बेसिकली किलिंग समबडी विदाउट ए लीगल ट्रायल, you taking laws in your hands and killing somebody by a mob because you think they did something wrong. A father had been lynched from a crime he did not commit. That's lynching. Without a legal trial is lynching. Screenshot ले लो सब इसका. I'll move to the next slide. Mob lynching को क्या mob kill करती है? अगर सिर्फ lynching है तो एक अकेला person भी कर सकता है. Okay? Guillotine is a related word, Samath. Yes. Yes, of course it is. All right. एग्जीक्यूट भी हो सकता है, बट एग्जीक्यूशन लीगल हो सकता है, लिंचिंग इज नेवर लीगल। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Envisage, we've done this word before multiple times. So basically you think of, you make a picture in your mind about a future possibility of event,
You envisage it. The Rome Treaty envisaged free movement. They thought, they picturized in their head a free movement across frontiers. That's envisage. We've done this word multiple times in the past. Okay. इस वर्ड को प्रोनाउंस करने का कौन ट्राई करेगा? ब्रेक करके प्रोनाउंस करता हूं. ट्राइस काइडी का फोबिया. ओके, अब इसका मीनिंग कैसे निकलता है? देखो, ट्राई 3. आपको पता है मैं कौन सा आर्टिकल लेने वाली हूं? दोस्त पीपल हु रीड द इंडियन एक्सप्रेस वुड नो व्हाट आर्टिकल आई एम गोइंग टू रीड. एग्जैक्टली, विसिज. विस इज नॉट फेस, तनिष्का. नो, विस इज विजन. सी, VIS root word does not mean face. VIS root word means to see. So vision, visionary, ये सब same root word VIS से आया है. Okay? Fear of 14 नहीं तनिष्का, fear of 13. Try is 3. Okay? Yes, 13. Exactly. So number 13 से डर. फ्राइडे द 13th बहुत पॉपुलर था कि नहीं नहीं ये तो खराब दिन है. मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगी 13 के साथ. ओके, सो फोबिया ऑफ 13th एंड फ्राइडे इज नो, बेसिकली ओनली 13 इज दिस फोबिया. ओके, नो 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 नो, लिंचिंग इज नॉट सिनोनिमस टू एनकाउंटर. बिल्कुल भी सिनोनिमस नहीं है. ओके, टाइप्स ऑफ फोबिया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एनविसाज फिर से बताऊं समझ? ओके, इसको ब्रेक करो. आपको मैं सबको समझाती हूँ. ब्रेक करते हैं इस वर्ड को. VIS is to see. मुझे विजन्स आते हैं, नहीं आते, एग्जाम्पल है, मुझे विजन्स आते हैं, मतलब मैं कुछ देखती हूं. ओके, एनविसाज भी देखना होता है, अपने दिमाग में कुछ पिक्चर बनानी होती है. बट वो पिक्चर किस चीज की है? एक फ्यूचर इवेंट की. फ्यूचर में क्या होगा? मैं एक NLU में बैठी हूं और मेरे पढ़ाई में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो NLS में हैं अभी. ये मेरा what am I doing? I'm envisaging. I am contemplating a possibility of a future event. That is envisage. Okay? Superstition. Explanation का नीड है. एक ऐसा बिलीफ जो कि जो लॉजिकल नहीं है और रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, वो सुपरस्टिशन हो गया. He dismissed the ghost stories as mere superstition. ये अंधविश्वास. सुपरस्टिशन का यही हुआ ना सिनोनिम हिंदी में. So believing something that's not logical is superstition. ओके, विंटेज. विंटेज एक तो हम ओल्ड के साथ, ओल्ड एंड क्वालिटी के साथ हम लिंक करते हैं. इन द पास्ट राइफल्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड विंटेजेस वर प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लेस. एट द टाइम समथिंग दैट ऑफ क्वालिटी वाज प्रोड्यूस्ड. पुराने टाइम की क्वालिटी चीज इज विंटेज. ओके, ऑल राइट. एनी क्वेश्चंस? डेजा वू रिलेटेड है. यस. ओके, यस, अंधविश्वास. डेजा वू इज नॉट एनविसेज. एनविसेज आप मेंटली अभी भी अगर कोशिश करोगे तो आप सोच सकते हो. डेजा वू इज अ सिचुएशन व्हिच हैपेंस टू यू जहां आपको लगता है ओह आई हैव सीन दिस बिफोर इन माय लाइफ. इट लुक्स लाइक आई हैव बीन दिस सिचुएशन बिफोर. दैट्स फीलिंग इज डेजा वू. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. स्लाइड नंबर 2. Empirical, based on or verifiable by observation or experience rather than theory or logic. मेरा लॉजिक बोलता है अर्थ राउंड है. लॉजिक जो मैंने स्कूल में पढ़ा है, थ्योरी ये बोलती है अर्थ राउंड है. बट अगर मैंने, एग्जाम्पल है, अगर मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं कभी भी दोबारा उस पोजीशन पे पहुंची ही नहीं, तो इट्स एम्पिरिकल दैट द अर्थ इज फ्लैट. तो आपकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जो बोलती है rather than theory जो बोलती है is empirical. Okay, they provided considerable empirical evidence to support their argument. उन्होंने बोला थ्योरी कुछ और बोलती है बट हमारा एक्सपीरियंस कुछ और बोलता है. That is empirical. Okay, so got this everyone? Yes, we have tons of new vocabulary today. Okay, surely this is basically the fear of number 13. Try यहां 13 के साथ है तो नंबर 13 से डर होना. आर्टिकल में डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको ये. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट इज सफाइस, सफिशिएंट, एडिक्वेट, इनफ इज सफाइस. अ क्विक लुक शुड सफाइस बिफोर एन इजी टेस्ट. क्लैट स्टार्ट करने से पहले हैविंग
a skim through the paper and seeing if there's no change in the pattern would suffice. And then you can start solving your paper. Transcendental. Okay, transcending, this is trans. Okay, but transcendental हम बात करते हैं रियलिटी से आगे जाके, जब आप स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हो वो ट्रांसेंडल होता है. ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फिलोसॉफिकल टर्म है. The transcendental importance of each person's soul can never be mapped by science. साइंस के आगे आपके सोल का स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, क्यों आपकी सोल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ये ट्रांसेंडल रीजनिंग हुई rather than scientific reasoning. Okay, that's transcendental. ये वर्ड I'll repeat बहुत बार philosophical articles में आता है. Okay, and the last word discrete. Okay, now tell me, before I tell you the definition of this word, tell me the difference between discrete. एक ये discrete हुआ, एक double et हुआ. डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? ये होमोनिम्स हो गए. It's good. Yes, Arshita, it's good. But remember, 100 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी. आपको 100 से ऊपर ही एम करना है. 60% 10 AM. Okay, Samarth, looks like we are going to stick to 10 AM then. I did not see the vote results yet. Empirical हो चुका है. Yes. Ma'am, transcendental is used in Bhagavad Gita as well. Okay, I haven't read it though, but if you say so. Vintage, बच्चे पुराना और क्वालिटी जो पुराने टाइम में बनी है बट क्वालिटी बनी है वो हो गया विंटेज. ओके, कनिष्का आया समझ में बच्चे? ओके, यस, ETE वाला डिस्क्रीट जो मैंने लिखा इज डिस्टिंक्ट. एग्जैक्टली वृंदा, इट इज. And yes, to separate, yes, and double ET is being very careful. I have to be very discreet with my Hindu class so that I don't hurt sentiments, क्योंकि इतने opinionated articles आते हैं. I can't be a part of meme making industry, है ना, कि मुझ पे meme बन जाए. So I have to be very careful with what I say, and I have to be very, very careful of not giving away my opinion. So I am discreet, double ET. Okay. All right. So I hope everyone gets the difference. Discreet, careful, so that you don't hurt anybody or maybe embarrass, don't get any embarrassment to yourself. So that was the last slide. Double ET समझाया समर्थ मैंने. double ET तो बहुत carefully ऐसा बोलना ताकि आपको कोई humiliation नहीं मिले, कोई embarrassment नहीं हो आपको. All right, let's move to the articles now. I hope सबने screenshot ले लिया इसका. General Bipin Rawat, we had to take this article. Okay, I hope my body isn't cutting the article. Give me 1 second. Everyone, 1 second. Meticulous बोल सकते हो. Yes, Krantika, absolutely. Okay. Here. I don't have to introduce him. If you've been even a bit aware of our country, of our nation, you would know him. Okay, if you don't know him, it's a disgrace. Especially after day before yesterday. If you don't know him, it's a disgrace. General Bipin Rawat, India's first CDS. So this position, this designation wasn't there before he took up this designation. There was a new designation created for him. He was on a mission to modernize military, and it was a very difficult. Military, army, they've been serving our nation for so many years, and they're considered to be a very rigid in terms of their rules and regulations, and they follow it strictly. So to bring any kind of change would have been really, really difficult. It certainly was difficult for General Bipin Rawat. And the nation will dearly, dearly miss him because he was a visionary. In the untimely death of General Bipin Rawat in a helicopter crash in Kunnur, Tamil Nadu, India has lost a fine soldier who rose to become country's most senior general as its first CDS, Chief Defence Staff. Now,
sorry for hijacking the whole emotion that is attached to the article. There could be a lot of GK associated with this article as well. So work on the full form of this, work on who he was, work on what else did he do for the country, what else position did he hold, how long he served. ये सब कुछ आपकी जीके के क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. ओके, ऑल राइट. आई टोल्ड यू कार्तिक आज हिंदू में आएगा. ये हिंदू हमेशा एक दिन डिलेट देता है ये आर्टिकल्स. जिक्रा 10 AM. ओके, हियर वी गो. सो ऑल बट वन, देखो ये ग्रामेटिकल फ्रेज है. ऑल बट वन का मतलब एक को छोड़ के सारे. बट हियर इज एक्सेप्ट. All except one of the 14 people on board were killed, and that one person who's saved is still struggling with his life in the crash of MI. Acha, this data is also important. Okay, transporter which was ferrying them for Sulur Air Base to the Staff College in Wellington. The Air Force was ordered an inquiry to ascertain the cause of the accident. What was the reason? In which General Rawat's wife, who were the other people who were traveling apart from General Rawat, his wife, 2 of the 3 IAF pilots, his military advisor, staff officer, and 5 other soldiers who were members of his staff. So his entire team, including his wife, were killed. Rawat, who was army chief until December 9, 2019, when he was elevated to the newly created office of the CDS. तो अभी तक वो आर्मी चीफ थे 2019 दिसंबर तक. फिर एक नया पोजीशन बनाया गया CDS का, वो उनको दिया गया. Was vastly experienced officers. He, having served both the northern and eastern commands, he served both the commands. He also headed the southern command as well. He was involved in country insurgency operations in both Jammu and Kashmir and Northeast. तो दोनों जगह उन्होंने बहुत ट्रेमेंडसली एफर्ट दिखा के सर्व किया. जो इंसर्जेंट्स कौन थे मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में AFSPA वाले आर्टिकल्स में. तो जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में दोनों जगह उन्होंने बहुत अच्छा शो दिखाया. एंड हिज बटालियन वाज अमंग दोज डिप्लॉयड along the actual line of actual control, LAC, जो चाइना के साथ आता है, in Arunachal Pradesh district, not the Doklam area but the Arunachal Pradesh one, during the, no sorry, not the Ladakh area but the Arunachal one, during the 1987 clash with the People's Liberation Army in Sumdrong 2. Rawat's tenure as army chief coincided with India's political leadership adopting more muscular policy against Pakistan. So Pakistan against, we've had different kind of policies every time there's a new chief. Sometimes we are quiet, sometimes we are aggressive. With his tenure, we were muscular, we were strong. The standoff with China at Doklam at the LAC also took place under his watch. So he was heading our military while the standoff with China at Doklam at the LAC happened. At the time, he was among the first to speak openly about. So, dekho, we've had leaders, we've had people heading. Yes, he was about to retire next year. कोई अच्छा वीडियो टीम, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, एक भी अनवांटेड कमेंट आया दैट वेरी मोमेंट आप ब्लॉक कर देना, ठीक है. Yes, he carried out a surgical strike as well. Exactly. Yes. LOC is Pak, line of actual control is China. Yes. All right. So now we've had leaders, we've had people who've headed at different places who do not speak their mind, but he was one of them who was never shy of speaking out his mind. He was a part of a lot of controversial statements as well. We'll see what were those. So he openly said that possibly India is going to face a two-front war. Two-front war, दोनों neighboring countries के साथ. He said that openly. He quoted controversy both as army chief and a CDS as well when he waded into matters outside the remit of his office. Remit of his office मतलब उनका काम जो है, अगर उनके बाहर जाके वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं या बाहर कंट्री के बाहर कुछ कंट्री में हो रहा है बट उनके डिपार्टमेंट के बाहर हो रहा है कुछ और वो वैसा कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो कंट्रोवर्सी बना सकती है. बट ही वाज ओपन विद हिज आइडियाज. ही सेड मल्टीपल थिंग्स और कभी कभी उनकी बोली हुई चीजों पे कंट्रोवर्सी भी हुई. कैसे स्टेटमेंट पे कंट्रोवर्सीज हुई देखिए. हिज रिमार्क अगेंस्ट द प्रोटेस्ट्स ओवर द सिटीजनशिप लॉ अमेंडमेंट्स CAA
में जो अमेंडमेंट्स हुए और उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया उसके बारे में। कंपैरिजन ऑफ माइग्रेशन इनटू असम एज एन एक्ट ऑफ बांग्लादेश सीकिंग लेवेंस्ट्रॉम। उन्होंने ये बोला कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द सीएए, उन्होंने इस चीज को कंपेयर किया है माइग्रेशन जो हो रहा है आसाम में। उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा लग रहा है ये देख के कि बांग्लादेश को लेवेंस्ट्रॉम चाहिए। मैं लेवेंस्ट्रॉम समझा चुकी हूं पहले, तो आप यहां लिंक कर लो कैसे बांग्लादेश के साथ लिंक। हिज अप्रूवल ऑफ लिंचिंग एज एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ डीलिंग विद टेररिस्ट्स एंड इन JNK। पॉसिबली उनका ऐसा सोचना जस्टिफाइड था बिकॉज उन्हीं के टीम के लोग फाइट करते थे टेररिस्ट से JNK में, आप और हम नहीं करते थे, और उन्हीं के टीम के लोग अपनी लाइव्स लूज करते थे वहां। तो शायद उनका ऐसा सोचना कि लिंचिंग जस्टिफाइड है JNK में अगर हमको टेररिज्म से डील करना है तो। काफी फ्लैक उन्होंने इसके लिए भी रिसीव किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ, अच्छा, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एक सपोर्ट आर्म बोला है आर्मी का। ये बोला कि एयरफोर्स तो एक सपोर्ट आर्म है। ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट्स ये जो हैं ये रिग्रेटेबल थे, ये अनकॉल्ड फॉर थे। यस, as serious it fell to Rawat to draw up plans for the modernization of the military। बट ये जो स्टेटमेंट्स थे जो उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर दिए, ये मैटर नहीं करते हैं क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर मिलिट्री में थी और वहां उन्होंने he gave a brilliant show। So he was responsible for the modernization of military and make it an efficient fighting force, a responsibility he took up with much enthusiasm and it was a cause close to his heart। What was the cause? The cause was modernization of military, and it was very difficult to change military. So the modernization was a result of his efforts only। Exactly, Abhinav. Yes, you're right. Okay. So, however, integrated battle commands into which he wanted to reorganize the army did not materialize, mostly due to cost। और भी चीजों के कारण नहीं हो पाया, बट ही ऑलवेज ट्राइड द बेस्ट फॉर इट। द प्रपोजल टू एलिमिनेट द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर टू गॉट अ कूल रिसेप्शन। ही सेड ब्रिगेडियर का रैंक हटा दो, एंड पीपल वर ओके विद दैट। इट गॉट अ कूल रिसेप्शन। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ही वाज प्रीऑक्युपाइड विद द चैलेंज ऑफ थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन क्या है ये समझ लो। नाउ गिव मी 1 second, लेट मी पेस्ट समथिंग फॉर यू इन द चैट बॉक्स। ओके, give me 1 minute। I'm pasting something in the app on our YouTube as well। चैट बॉक्स में पेस्ट कर रही हूं, इसको आप अपने नोट्स में लिख लो। ओके, Here we go। ठीक है, YouTube में, ऐप में, दोनों जगह पेस्ट कर रही हूं, कॉपी कर लो। ओके, अब देखिए, now here we are। What is theaterization? So basically the idea of army, navy, air force all coming together. These are the different aspects of our security system of our country। Everyone coming together, everyone working jointly। इनको अलग अलग एंटिटी ना देख के इनको जॉइंट माना जाए, ये है हमारे concept of theaterization। So he was preoccupied with the challenge of theaterization, with the challenge of jointness, because सबकी willingness नहीं थी एक joint entity बनाने की of the armed forces, envisaging the 5 integrated theater commands। कौन से थे 5 integrated theater commands? मैंने chat box में लिख के दे दिया, ऐप में और YouTube दोनों में। Okay, these were the 5 integrated theater commands that would combine the tri-services, Navy, Army, Air Force, instead of each having separate commands। उनको combine करने की उनकी effort थी। Okay, got this everyone? आया समझ में? Got this line everyone? Exactly, Abhinav। Yes, exactly। Oh, it exists only and only in Lakshadweep and Andaman in our country। Joint command, nowhere else। Okay? All right, now let's move ahead। I hope you've copied the data I've written for you। So, reforming a military is no easy task। Absolutely not। But in that 1 year that remained of his tenure,
he was determined to push them through. Sadly, God had different plans, but his tenure has been a brilliant one. Tone of the author. Tone, ध्यान से बताना, appreciative नहीं है, सोच के बताना. Yes. Tone of the author. No, I am referring to not Abhinay, Abhinav. Abhinav is in the app. Okay. Analytical. It is analytical. Informative, analytical. Informative, analytical. Because he is analyzing his tenure, and the author is also analyzing the good and maybe the regrettable things he had said. So it's informative and analytical. Okay. Alright, so I hope everyone gets this article. The next one is difficult. We'll have to move slow. This we knew about. I'm sure आपने newspaper पढ़ा तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी. But I had to take this article. But the next one is a little difficult one. उसको slowly लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. Okay? So here we go. I'm going to tell you my personal story as well. Okay? The fear of numbers, letters, and other irrational phobias. Irrational क्यों बोला है? Irrational इसलिए है जैसे पानी से डर है, तो इसलिए डर है कि मैं डूब जाऊंगी. ये irrational नहीं है. हाइट से डर है इसलिए कि मैं गिर जाऊंगी तो I'll be killed. ये irrational नहीं है. लेकिन नंबर 13 से डर, that looks like an irrational one. What will number 13 do to you? I strongly believe it's an irrational one. So बहुत सारे नंबर से लोगों को डर लगता है, बहुत सारे लेटर्स से लोगों को डर लगता है, और बहुत सारे और ऐसे इरेशनल फोबियास है. फ्राइडे से लोगों को डर लगता है, मुझे नहीं लगता है फ्राइडे से डर. So let's see that. Some buildings or hotels or hospitals do not have the 13th floor. वो पता है कैसे नाम लिखते हैं? 12th के बाद सीधे आप 14 लिख देते हैं, या फिर 13th को वो लोग 12A कर देते हैं. They don't have 13th floor. Some do not have room number 13. Restaurants may avoid table number 13. Airports may have no gate number 13. And Friday और 13th का जो combination है, it makes it even worse. And I have lost count of the number of films that have the theme Friday the 13th. कुछ खराब हो गया, ghost आ गए, zombies आ गए, apocalypse आ गया. Friday the 13th के बारे में जो movies बनी उनमें कोई count ही नहीं है. Friday the 13th is a stuff of horror. People are actually scared of Friday the 13th, and there is a specific term for that phobia. So many phobias have long names, और इसका भी long name है. अब ये नाम है Friday the 13th का phobia. इसको हम break करके देखते हैं. इसको याद करना easy हो जाएगा अगर आपको याद करना है तो. So Frigg is the first part that we break. Frigg is the goddess who lends her name to Friday. और उस goddess के नाम से Friday बना, तो Frigg is Friday. Tri is for 3. Okay. So trichi is 13. And then phobia is being scared. So scared of Friday the 13th is this phobia. Okay. Got it everyone? Phobia of maths. आशीष ये तो मुझे भी है. गुलशन मैं आपको बताती हूँ फ्राइडे द 13th की बात, मेरा एक्सपीरियंस. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. ओके. यस, हाँ, ब्रेक करके. बिल्कुल समर्थ, बिल्कुल करेक्ट. ओके. इट्स टोटली इरैशनल. ओके, सो नेक्स्ट पेज. We thus have two different phobias combined. Fear of Friday and fear of 13. ब्रेक करा हमने वर्ड को, तो हमने दो कंबाइन किया यहाँ. Okay, Nathaniel has a book titled 13, The Story of the World's Most Notorious Superstition. ये notorious superstition ये है. What this is absolutely superstition. क्या होगा Friday the 13th को? कुछ नहीं होता. You know what? So I'll tell you my story here. I was to buy a flat in Noida. That was, I think,
10 years back. Yeah, 10 years back. And you know what? 13th floor was supposedly the cheapest. I said, okay, give me 13th floor. You know why is it the cheapest? Because the people don't want to buy flats on the 13th floor. The floor was named 12A, not 13. 13 नाम से लिफ्ट पे भी कोई बटन नहीं था. It was 12A. Okay? And the best time of my life started after I moved to this flat on 13th floor. Flat number 13. So my experience, it's all crap. The best time of my life, the best growth of my life is seen only after I moved to this flat. So ये बिल्कुल सुपरस्टिशन है, मन में मत लाना. गुलशन, you are lucky to be born on that day. है ना? That date. So the story of the world's most notorious superstition that this entangles the two fears and suggests that the fear of Friday is relatively a recent vintage. अब इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं. कह रहे ये जो Friday the 13 का जो fear है ना, ये एक recent vintage है. So as far as Friday the 13th is concerned, we can date it to Thomas Lawson's 1907 novel of that name. वहां से हम लिंक कर सकते हैं, इस नाम से नॉवल आई थी, which was about an artificially triggered Wall Street crash on Friday the 13th. आर्टिफिशियली तो ट्रिगर कर सकता ना हम वॉल स्ट्रीट क्रैश. आपने इतनी सारी मूवीज और सीरीज देखी हैं. यस, this maybe the fear of number 13 could be related to superstition. It is related to superstition only. It is completely a superstition. There's no logic behind that. Okay, so yes, it's a good deal. I got a cheaper flat. I got the best time of my life. Why wouldn't I appreciate that? Okay, so yes, lucky for you too, Samarth. Okay, so here we go. So एक फेक आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ. जैसे ही क्रैश होता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारा मनी लूज करते हैं, और वो फ्राइडे द 13th को हुआ. सो पीपल थॉट, ओह इट्स एन अनलकी डे. फियर ऑफ 13. अच्छा आप देखो 13 नंबर का फियर और पुराना जाता है. फ्राइडे द 13th बहुत ओल्ड नहीं है. फियर ऑफ 13 इज ओल्डर and contrary to popular impression predates to Judas and the Last Supper by several centuries. आप लिंक कर सकते हो जूडास और लास्ट सपर से. कैसे लिंक करता है नंबर 13? याद है किसी को स्टोरी द लास्ट सपर, जूडस किस? मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको. कैसे लिंक करोगे नंबर 13 को यहां? याद है किसी को? लेट्स सी हु रिमेंबर्स इट. Ashmita, you'll see it now. Why is it 13 only? क्या कौन बताएगा? 13th का क्या लिंक है जूडस और लास्ट सपर के साथ? मैं आपको फ्राइडे का भी लिंक बताऊंगी लास्ट सपर के साथ क्या है. No one? Nobody? Okay. So, Last Supper is that exactly, and the 13th person was Judas, and that's why it's considered to be unlucky. ये है original story. I'll tell everyone the story. So, Last Supper is a famous painting. आपने देखी होगी, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है. बीच में जीसस क्राइस्ट बैठे हैं, साइड में उनके डिसाइपल्स बैठे हैं, and that was considered to be Jesus's last meal, last supper. उनके जो डिसाइपल्स बैठे हैं, they are in total 13. जो 13th डिसाइपल थे वो एक्चुअली डिसाइपल नहीं था. ही वॉज जूडास, और जूडास वॉज अ पर्सन हु बीट्रेड जीसस क्राइस्ट, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो वो 13th था, इसीलिए उसको अनलकी माना जाता है. प्लस फ्राइडे वॉज द डे व्हेन जीसस वॉज पुट ऑन द क्रॉस. ओके, सो इसीलिए ये फ्राइडे को नेगेटिविटी के साथ और 13 को नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है. ओके, इट yes. Okay. Yes, here we go. I hope everyone gets it. So there have been empirical tests to check if Friday the 13th is truly unlucky. अब लोगों ने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करते कि क्या जेन्युइनली ऐसा है that Friday the 13th is really unlucky. They tried to collect data कि Friday the 13th को क्या ज्यादा एक्सीडेंट हुए थे.
ये चेक कर लेते हैं, जस्टिफाई करने की, रैशनलिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं इस इरैशनल बिलीफ को. द केस हैज नॉट बीन प्रूवन, कोई प्रूफ नहीं है, स्टैटिस्टिकली तो कोई प्रूफ ही नहीं है, माइंड में हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ द फियर द नंबर 13 इज ऑफन अवॉइडेड. आई डोंट सी अ रीजन टू अवॉइड दैट नंबर बिकॉज ऑफ इरैशनल फियर्स. अब देखो ये तो फ्राइडे 13th का फियर था, लेटर्स को भी अवॉइड करते हैं बहुत सारे लोग. देयर इज अ सिनोनिम फॉर दिस फोबिया, फ्राइडे 13th का. इसका एक सिनोनिम भी है, इतने बड़े वर्ड का सिनोनिम भी बना दिया, वो ये है, इसको आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस दिस, इसको ब्रेक कर लेते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द 2 ग्रीक वर्ड्स ऑफ फ्राइडे एंड 13. सो हमने इंग्लिश वर्ड्स देखे बट ये ग्रीक वर्ड्स पे डिपेंडेंट है. ओके तो ग्रीक वर्ड्स फॉर फ्राइडे एंड 13 को यूज किया गया है ये सिनोनिम बनाने के लिए. मैथमेटिशियंस एंड दोज हु यूज मैथमेटिक्स अ लॉट often used Greek letters. Yes, they love Greek letters. आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में बहुत सारे Greek letters used हैं. Now guys, be very careful with this paragraph because वो fear of Friday the 13 को लिंक कर रहे हैं एक नए fear के साथ. And I love this paragraph. ध्यान से पढ़ो इसको. So they used a lot of Greek letters. Letters of the English alphabet only suffice for limited purpose. ग्रीक, इसीलिए हमने ना बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स यूज करे हैं एटिमोलॉजी में इन इंग्लिश बिकॉज दे हैव अ ब्रॉडर मीनिंग. इंग्लिश हैज लिमिटेड, सो द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ओनली सफाइस फॉर लिमिटेड पर्पस लाइक 2 or 3 dimensional algebra. Beyond that there would be confusion. To avoid the confusion in mathematics, we the mathematicians used Greek words. Thanks to the book of Revelation, everyone who has read the New Testament बाइबल से लिंक्ड है. सो जिसको नहीं पता है आप उसको बाइबल से लिंक कर सकते हो. इसकी हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा. They know that the first letter of the Greek alphabet is alpha and the last is omega. Greek alphabet series में कितने लेटर्स हैं, कौन बताएगा कितने हैं इन ग्रीक अल्फाबेट? Yes? Okay, मैं बताती हूँ आपको. Thanks to the raging pandemic, everyone has heard of the 15th letter of the Greek alphabet, which happens to be Omicron. ये तो हमको पता ही है. Employing that practice of using Greek letters, WHO system of naming SARS-CoV-2 variants, उन्होंने Greek letters use करना start किए अपने कोविड वेरिएंट्स को नेम करने के लिए. It went down the list of the first 12 Greek letters. उन्होंने बोला हम first 12 यूज करेंगे. Ergo, the new variant said to be formed in South Africa should have been named NU, new. And next comes Z. लेकिन WHO ने बोला हम ये new और Z ये दोनों यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? WHO का जस्टिफिकेशन देखो. 2 letters were skipped, new and Z, because new is too easily confused with new. तो बोला हम इसको कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए न्यू नहीं यूज करेंगे, बाकी सारे यूज करेंगे. ग्रीक अल्फाबेट ये नहीं यूज करेंगे. किस लिए यूज कर रहे थे? कोविड वेरिएंट्स को नेम करने के लिए. ओके, नाउ जी क्यों यूज नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज अ कॉमन सरनेम और एक पॉपुलर पर्सनैलिटी का भी है. एंड WHO बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर नेमिंग न्यू डिजीजेस suggest avoiding causing offense to any culture, offense to any person, offense to any social, national, regional, professional, ethnic group. तो वो ऐसा ही नाम यूज करेंगे जो किसी को ऑफेंड नहीं करे. तो उन्होंने बोला हम न्यू भी नहीं यूज करेंगे और जी भी नहीं यूज करेंगे. A lot of transcendental and professional groups, transcendental समझा चुकी हूँ मैं आपको. Transcendental and professional groups are interested in pi, which comes next. मतलब पाई चूज कर लेते हैं. ये क्या हो रहा है? हम कोविड के नाम चूज कर रहे हैं बैठ के. Imagine what will happen if tau ever comes to be used. Imagine what will happen. हम रिवोल्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं ताऊ यूज नहीं हो सकता, वो हमारा बर्थ राइट है, हम यूज करेंगे ताऊ. No matter, yielding to a phobia who decided to be discreet and not 2 Greek letters. So they decided हम ये दोनों नहीं यूज करने वाले. Tone of the author, everyone. What is the tone here? Okay. What is the tone here?
यस यस अभिषेक यस। नहीं सार्केज्म नहीं है एक्चुअली, नो 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 नो, सार्केस्टिक नहीं है, नो नो, वो इट्स एक्चुअली क्रिटिकल एंड ह्यूमरस। सार्केस्टिक नहीं मार्क कर सकते हम इसको, वो सिर्फ एक दो लाइन से सार्केस्टिक, पूरा आर्टिकल का टोन नहीं है सार्केस्टिक, ह्यूमरस बोल सकते हो। एंड एक्सप्लेनेटरी में भी, इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेटरी, यस, द फर्स्ट 2 paragraphs are explaining it. Okay? All right. So नहीं सटायर नहीं बेटा, सोशल इशू नहीं लेके आ रहा है, ह्यूमर है। और yes of course Xi Jinping is who I was referring to. Okay? All right, चलो, I hope everyone gets आज मेरा वॉइस ब्रेक नहीं हुआ ना, I was using this new microphone, I don't think आज वॉइस ब्रेक हो रहा है। Looks good. पोल नहीं आ रहा, ऊपर पोल है बच्चे, पोल का आंसर क्या है बता दीजिए मुझे, कितना आ रहा है। तब तक मैं आपका आज का न्यूज़पेपर शेयर करती हूँ। लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वी शुड बी रीडिंग फ्रॉम टुडेज हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। गिव मी 1 second, लेट मी ओपन इट अप। One second guys, I'll share today's newspaper. (10 AM 54%, 7 AM 45%. All right. So the classes time seal lag gayi hai, is going to be 10 AM only. Please do not argue because I have no choice. It's going to be 10 AM only. Okay. So voting हो गई है, 10 AM की पार्टी जीत गई है, 10 AM ही होगा। प्लीज डोंट आर्ग्यू, आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो चॉइस। आर्टिकल्स देख लो आज क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, योर आई एम शेयरिंग इट इन माय बैकग्राउंड एवरीवन। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज एवरीवन, प्लीज 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 डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी, आई हैव नो चॉइस हियर बच्चे। लेट्स लुक एट टुडेज एडिटोरियल। Here it is. Visible है सबको बैकग्राउंड में? Okay. Got it, Samarth? Absolutely. तो आज का आर्टिकल देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन आना ही था आज हिंदू में, बिल्कुल पढ़ लेना, स्किम कर लेना, क्योंकि आज अपने डिटेल में पढ़ लिया ऑलरेडी आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में, इसको आप स्किम कर लेना। सेकेंड आर्टिकल बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओमिक्रॉन शैडो को डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट, यस यस यस, इन डिटेल। डोंट हैव टू रीड, डोंट रीड दैट, ओके, ओनली स्किम, only skim. We've already had an article on if we need a booster dose or not. You know about that. You can skim through it. It's a long, long article. Please skim. I would like to know the writers. Next page. No, don't read this. Don't read this. Okay. Let's move to the Indian Express. Okay. Here we go. Here, a shared meal can be the social glue that, बहुत important, पढ़ लेना। Across India, minorities are overrepresented. Skim. Rising income inequality is a cause of concern. Skim. All those who are not comfortable with economy, articles on that. ये आर्टिकल easy है, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ो प्लीज साइमल्टेनियसली इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को विकिपीडिया पे सर्च करते रहना। You need to be comfortable with at least something of this sort.
GDP, इनकम इनइक्वालिटी, ये सब क्या चीजें हैं, या ये बहुत लेमैन टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए. Farmers have won. Yes, blocks खुल गए हैं. All the borders are open now. After a year-long struggle, they have won. Government should see this as defeat, but a learning. Skim कर लेना. Ambition without idealism is dangerous. देखो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है. CGI NV Ramana writes this article. Law students, young lawyers cannot remain aloof from social reality. इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना. I'm going to take this article tomorrow. Okay? Suspension of 12 MPs from entire winter session is worrying. छोड़ दो. Taking forward General Rawat's legacy. Skim. पढ़ लेना इसको. Nagaland's people deserve neither AFSP nor gun culture. बिल्कुल पढ़ लेना इसको. अब push against toxic masculinity. बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना इसको. I think I'm going to take this article also tomorrow. Don't ignore context of NFHS data. Skim. Okay? That's all. That is all from today's articles. Ankita Bache, please don't argue. I have no choice. I hope you understand that. I had taken a call for 7 a.m. Right? I went out of my comfort zone to do it. You know I teach till 9 in the night. I still went out of my comfort zone. But if there are more people who would want it at 10, I'll have to move it at 10. I hope you understand my issue, my conundrum. I'll see you at 12:30 everyone. Parajumbles class on BBA platform. Okay? This is the second class today on Parajumbles. Yes, 12:30 class will happen today. Thank you everyone. Have a very fruitful day. See you at 12:30. Bye.